So, hi everyone. It is next lecture of moving coil magnetism. So, our topic is moving coil galvanometer. But before studied about moving coil galvanometer, we have to study about its principle, that on which principle this moving coil galvanometer works. Wait. Yes. So the moving coil galvanometer depends on the principle that when a current carrying coil is placed in the external magnetic field, it experiences torque. So now we study firstly about what is torque. So let us consider a rectangular current carrying coil or current carrying loop which is placed in an external magnetic field inside a horseshoe magnet. So this is a rectangular coil, current carrying coil. Before it we have studied about what is a force on a current carrying conductor placed in a magnetic field B. Right? We have studied now. So we have studied the force on a current carrying conductor placed in external magnetic field. What is the magnitude of that force? F is equals to ILB sine theta. Now we have the rectangular coil. So what is the different types of forces act on that rectangular coil? So this is a current carrying coil placed in a magnetic field B. So what is the force? What is the magnitude of the force? It's ILB sine theta. So this is one conductor placed in form magnetic field B. The force is ILB sine theta. In a rectangular coil, we have four conductors. ठीक है? ठीक है? In this, we have four conductors. This 1, 2, 3, and 4. So this is rectangular coil. That means four conductors in a loop are placed in uniform external magnetic field B. ठीक है? To consider a rectangular coil given name having current I flowing through it, having current I is flowing through it and it is placed in uniform magnetic field B. Uniform magnetic field B. Let us consider the area of this rectangular coil is A. ठीक है? This is breadth, this is length. ठीक है? Length or breadth. Here side B and side. Now the direction of current in this rules or laws which are used to determine the
Firstly and very simple is right hand thumb rule, है ना? So this right hand thumb rule, the direction of magnetic field is, what is the direction? It is placed in the uniform magnetic field. The magnetic field lines goes from north to south. ठीक है? We have the direction of magnetic field, या चाहो तो आप right hand thumb rule से डिटरमाइन कर सकते हो. ठीक है? इस तरीके से आउटवर्ड होगा, या फिर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हो टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है? सो करंट गोज अप, मैग्नेटिक फील्ड यहां है. ठीक है? वेयर इज अ फोर्स, वी पुट दिस, करंट गोज अप, मैग्नेटिक फील्ड देयर. इस तरीके से the force will be there. Is the force, जो force in the rectangular coil. ठीक है? So by using FLHR, Fleming's left hand rule, the direction of force in this conductor is there. ठीक है? And in through this conductor, या through this side, it is acting downwards. And from here and here, this QR and this RS, the forces are acting like this, opposite direction. So because the magnitude is seen, F is equals to ILB sin theta. एक कंडक्टर में जो फोर्स होगी F is equals to ILB sin theta. तो यहाँ पे आउटवर्ड होगा, यहाँ पे इस तरीके से नीचे होगा. So कैंसिल आउट थ्रू दिस आर एंड दिस आर. ठीक है? तो ये वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी बिकॉज दे आर एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, opposite direction. That means so we have only these forces. ये forces हमारे पास बचेंगे. ठीक है? तो force on a current carrying rectangular loop, वो किस तरीके से बचेंगी? जो this is a rectangular loop. ठीक है? Current is flowing upward, then there, then there, then there. Now ये जो forces हैं, एक यहाँ पे act हो रही है, कि यहाँ पे हो रही है, they cancel out each other. ठीक है? Only we have this force and this force. ठीक है? So now the forces magnitude कितना होगा? It's ILB. If we took 1/4 in case, ठीक है, only a current carrying theta, F is equals to ILB sin theta. ठीक है? ILB sin theta. So now what happened? This like a, this is a conductor. ठीक है? One force इसके ऊपर की तरफ लग रही है, one force acting downward. This is angle theta. So and this is side A. साइड है, this is A side and this is B side. So A साइड के ऊपर यहाँ से यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, और इस वाली साइड पे यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है. So when the forces act in opposite directions, like vertically opposite directions में लग रही हो, एक ऊपर लग रही है, एक नीचे लग रही है, and they have the same magnitude. Magnitude कितना है दोनों का? F is equals to ILB sin theta. ठीक है? परपेंडिकुलर लग रही है ना इस पे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर लग रही है, यहाँ से परपेंडिकुलर लग रही है, तो साइन 90 डिग्री हो गया, राइट? एंड साइन एट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1. तो मैक्सिमम फोर्स लग रही है दोनों साइड से. तो इस तरीके से जब फोर्स लगती है दोनों साइड से एक कंडक्टर पे, एंड is placed in external magnetic field. So when the forces acting equal in opposite direction and are parallel to each other, एक दूसरे के parallel भी हैं ये forces, so it generates a couple. That means it generates a torque, and torque
torque is a physical quantity which rotate that conductor, या which is required to produce a turning effect. ठीक है, so forces are parallel, ठीक है, equal in magnitude and acting in opposite directions, and acting in, ये ऊपर की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ, दोनों पैरेलल है, एंड आई एल बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड सेम है, in opposite direction, so it generates a couple, ठीक है, so it generates a couple which produces टॉर्क. ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा. तो टॉर्क है क्या हमारा? इट इज द क्वांटिटी विच प्रोड्यूस रोटेटिंग इफेक्ट, जो इसको कंडक्टर को रोटेट करेगा इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. अपने एक्सिस के अराउंड क्या करेगा? ये कंडक्टर इस तरीके से है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसको रोटेट करेगा. और टॉर्क कहाँ लग रहा है? इस आर्म के क्रॉस लग रहा है. तो हमने ये वाला छोटा पोर्शन ले लिया इसका, यानी कि यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगी, यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगी, सो हमने इसको एक्सटेंड किया, ये 90 डिग्री है, वी टुक दिस थीटा. ठीक, यहाँ पे भी बनाया गया है, अंडरस्टूड ना बेटे? ठीक है, तो इट प्रोड्यूस द टॉर्क. टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन द कंडक्टर इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कौन सा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जो रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, नीचे वाला जो आर्म है, नीचे वाला जो कंडक्टर है, उसके यहाँ पे ये वाले कंडक्टर के अक्रॉस ये फोर्स लगेगी और ये रोटेट करेगा. सो टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर टर्व. टर्व इज इक्वल टू फोर्स. फोर्स कितनी है बेटे? आई एल बी, और 90 डिग्री पे लग रही है परपेंडिकुलर, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर हम ये ट्रायंगल लें, वी फाइंड साइन थीटा हियर, सो साइन थीटा इस ट्रायंगल में लिया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये ए आर्म है हमारी, ठीक है, having side A. So in this triangle find sin theta. Name the triangle ABC or whatever. Now find the angle sin theta. So sin theta is equals to perpendicular over hypotenuse. So sin theta is equals to perpendicular is you have to find the perpendicular given hypotenuse is A. So we can find this perpendicular as, जो भी इसका नेम होगा परपेंडिकुलर का, ये दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्चुअली इट्स ए साइन थीटा. ठीक है, हमारे पास साइड ए थी, दिस इज एंगल. नाउ वी कैन इजीली फाइंड दिस परपेंडिकुलर. सो दिस परपेंडिकुलर P इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, अक्रॉस व्हिच द रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस. सो द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज 90 डिग्री एंड दिस परपेंडिकुलर P इज इक्वल्स टू A sin theta. So tau is equals to sin 90 degree. ठीक है, sin 90 degree is 1. So it's ILB A sin theta. Now it is length, it is breadth. We can write this length as B. We have the rectangular coil. ठीक है, this is a rectangular coil. So this is side B, or we can take this as L. So this rectangle has a area length into A, L into A, और या आप लिख सकते हो B into. और मत करो सर. If you want to study, just concentrate on your study. ठीक है, right बेटा? So it is length, it is area. This side A, the rectangular we have ना, rectangular coil that we have.
सो इट इज L, आप इसको साइड B भी ले सकते हैं. दिस इज A, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मींस L इनटू A. सो tau इज इक्वल्स टू I, दिस इज एरिया, दिस इज B, is sin theta. ठीक है. So if we have the n number of turns, if we have the n number of turns, if n number of A, B, right? So we have the last expression tau is equals to बिना sin theta. ठीक है. B is the magnetic field, I is the current, N is the number of turns, and A is the area of the rectangular coil. So from here we can easily see that tau is equals to बिना sin theta, directly proportional to magnetic field, directly proportional to the current, directly proportional to the number of turns, and directly proportional to the area of the coil. Now we have some special cases for it. ठीक है. But ठीक है, parallel. Then tau is equals to बिना sin 0 degree, and at sin at 0 degree is equals to 0 degree is equals to 0. ठीक है. So it will be 0, यानी कि no torque act on it if that conductor aligns with the uniform magnetic field, right? So no torque experienced by that conductor. Understood? Second, if the theta is 180 degree, that means the magnetic field from north to south, we align that current carrying conductor in the anti-clockwise direction. Then also it's बिना sin 180 degree, बिना sin 180 degree, sin at 180 degree is also 0, so no torque act on it. So when will the torque act? The torque will act when the theta is equals to perpendicular. ठीक है. 90 डिग्री पे जब वो होगा then only it acts. ठीक है. जैसे अभी रेक्टेंगुलर कॉइल में हमने देखा था, ऊपर नीचे का जो मैग्नेटिक जो फोर्स थी, इट इज इक्वल्स टू 0. मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स व्हेन इट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट मैग्नेटिक फील्ड. सो मैक्सिमम के केस में मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा तो बिना साइन 90 डिग्री इट विल बी. ठीक है. एंड एट साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू बिना. दिस इज अ मैक्सिमम टॉर्क एक्ट ऑन. ठीक है. मैक्सिमम राइट. ठीक है ना. So here we have covered the principle of moving coil galvanometer. So it is the rectangular coil placed in uniform magnetic field, then it experiences torque. That means that rectangular coil starts moving. ठीक है. ठीक है ना. So this is the principle of moving coil galvanometer. Now we will discuss about what is moving coil galvanometer. This is very important concept, moving coil galvanometer, very important topic and may be asked in your CBSE board exams. ठीक है. Those students who want to study, focus only on the studies, keyword we will study. ठीक है. और जो कचरा है, जो गार्बेज है, that focus on the other things.
Now we have question. The maximum torque. The maximum torque acting on a coil of effect area, that is 0.04 meter square, is or minus 8 Newton meter. When the current 4 into 10 raised to the power 8 Newton meter, current 10 raised to power 4 ampere, now we derive the formula for torque, that is equals to बिना मैक्सिमम कब होगा when sin 90 डिग्री होगा, तो tau is equals to बिना put all the values, we have to find b, ठीक है. So to find b, rearrange this. B is equals to maximum tau upon INA. Put all the values. 4 into 10 raised to the power minus 8 upon 10 raised to the power 4 current हो गया. N is not given, that means we have to talk about 1, ठीक है. And area is 0.04, ठीक है. So power that goes up, इसकी पावर ऊपर चली जाएंगी, so it will be 4 and this will be cancelled. तो 4 into 10 raised to the power minus 8, यहाँ की डेसिमल हटाने के बाद 2 पावर्स और ऊपर चली गई, 10 raised to power 2, ठीक है, अपॉन 10 raised to power 4 into this 4 will be cancel out with the 4, ठीक है, and it goes up, यहाँ से -6 आ जाएगा, ये भी ऊपर का माइनस जाएगा तो -10, ठीक है. 10 raised to power -8, it will be -8 ना, हाँ -8, it will be 10 raised to power 4, so it goes up, 10 raised to power -6, it goes up, ठीक है. So it will be 10 raised to power -10. तो यहाँ से इनको कंपनसेट कर लो, ये 2 पावर्स यहाँ पे कंपनसेट हो जाएंगी, तो 10 raised to power it goes up, तो 10 raised to power -10 यहाँ से हो जाएगा टेस्ला, ठीक है. So this is how we can find the maximum torque. Next we have moving coil galvanometer. अभी हमने जो प्रिंसिपल किया था वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का था कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क. सो दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट. अगर किसी वायर में से स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो दिस इज अ डिवाइस व्हिच डिटेक्ट दैट स्मॉल करंट, तो इट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट स्मॉल करंट. So this is moving coil galvanometer. It have a rectangular or cylindrical current carrying coil placed radially in the uniform magnetic field. This is horseshoe magnet which provide the uniform magnetic field. ठीक है, रेडियली क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है उस पे वो अक्रॉस द रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कॉइल हो रहा है, ठीक है. So it is a principle. अभी हमने किया torque acts on a current carrying coil suspended in the uniform magnetic field. Due to this, the coil rotates, and hence the deflection in the coil of a moving coil galvanometer is directly proportional to the current flowing. यानी कि जब जो सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर coil को रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ही उसमें से करंट पास होगा, करंट कैरिंग वो रेक्टेंगुलर कॉइल बनेगी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी एंड रोटेट करेगी उसके बाद, ठीक है. और जिस एंगल से वो रोटेट करेगी दैट इज इक्वल टू या दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेक्टेंगुलर कॉइल या सिलेंड्रिकल कॉइल, ठीक है. So this is the moving coil galvanometer, cylindrical coil. This is a pointer. फॉस्फर या ब्रोंज स्ट्रिप का एक पॉइंटर होता है, यहाँ पे स्केल लगा होता है क्योंकि जो ट्विस्टिंग एंगल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. जितना करंट पास हुआ ये उतना नीडल डिफ्लेक्ट होगी, उतना ही ट्विस्ट होगी,
ठीक है। तो एक लीनियर स्केल भी ऊपर गिवन होता है, ये परमानेंट मैग्नेट्स गिवन है। जैसे ही इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ये वायर जो है ट्विस्ट होगी एंड इट गिव्स यू द रीडिंग ऑफ द करंट, क्योंकि जितना ट्विस्टिंग होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अंडरस्टूड? This is a principle. Construction, it consists of a rectangular coil of a large number of tons of thinly insulated copper wire. ठीक है, एक rectangular coil होगी जिसपे n number of copper wire wound होगा. Light metallic frame. The coil is suspended between the poles of a horseshoe magnet. Horseshoe magnet के poles के बीच में वो रखी होगी. That means to provide the permanent magnetic uniform magnetic field. And there is a phosphor bronze strip movable जो होगी that is connected with that rectangular coil. ठीक है, और जिसका जो पॉइंटर होगा, जो पॉइंटर है वो बनी हुई है फोस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप की, जो एक साइड से स्केल से कनेक्ट है, दूसरी साइड से रेक्टेंगुलर कॉइल से कनेक्ट है. द अदर एंड ऑफ दिस स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद बाइंडिंग स्क्रू. अ सॉफ्ट सिलेंडर इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, ठीक है, symmetrically inside the coil. The hemisphere magnetic poles produce a radial magnetic field. I am talking about this radial magnetic field. Why this called radial magnetic field? So radial magnetic field, that means the magnetic field acts across the radius in which the plane of the coil is parallel to the magnetic field in all its positions. ठीक है, एक दूसरे के जो magnetic field होगा वो parallel होगा. Like in this case, these are having parallel magnetic fields across the radius. That's why it is known as radial magnetic field. So small plane mirror attached to the suspension wire is used along with the lamp and a scale arrangement to measure the deflection. So it measures the deflection, that means measure the current by the linear scale. So what is the working? We have considered that PQRS rectangular coil, जो भी हमने principle देखा था और जो find out किया था. Radial magnetic field, the plane of the coil is always parallel to the magnetic fields. So sides PQ and RS are always parallel to the field, so they do not experience any force. यानी जो ऊपर और नीचे वाली हैं, they do not experience any force. यानी कि sin 0 डिग्री हो जाएगा उस केस में. ठीक है, which is perpendicular, that experiences a maximum torque. ठीक है, perpendicular जो है that experiences a magnetic torque. So torque experienced is the torque experienced is the torque experienced by the rectangular coil is tau is equals to क्या था torque, it's बिना sin थीटा. ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री होगा तो टॉर्क इज इक्वल टू 0. ठीक है, जो ये सेम था, जो कंडक्टर जो है वो सेम मैग्नेटिक फील्ड के अगर अलाइन है, दे हैव 0 डिग्री एंगल बिटवीन देम, पैरेलल या एंटी पैरेलल है. इन दिस केस नो टॉर्क एक्सपीरियंसेस. ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव दिस कंडक्टर, करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन. सो मैग्नेटिक फील्ड की भी ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बन रहा है. सो इस आर्म में कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, इसमें और इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है. वो टॉर्क हमने फाइंड किया था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि बिना साइन थीटा, राइट. सो टॉर्क इज बिना साइन थीटा. सो व्हेन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क, सो द फोस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप अटैच्ड टू इट, इसके साथ जो फोस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, तो वो जो फोस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है इट ऑल्सो रोटेट्स विद सम एंगल. वो थीटा हो सकता है, आप फाई ले सकते हैं, आप अल्फा ले सकते हैं. So when torque generates, when the torque is produced in the rectangular coil, it also experiences the restoring torque. ठीक है, the restoring torque also comes, जस्ट इसमें टॉर्क जनरेट होगा, इट मूव्स. ठीक है, ये रोटेट कर
अपनी पोजीशन पे वापस लेकर आने के लिए, टू ब्रिंग इट अगेन इन द ओरिजिनल पोजीशन, रिस्टोरिंग टॉर्क इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज टॉर्क इज इक्वल्स टू k थीटा। दिस इज इक्वेशन सेकंड वी हैव, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, sin 90 degree over here, so when we equate these, so what we have, bina sin theta tau is equals to k theta. When we equate these two, so tau is equals to, we have this k theta is equals to bina। ठीक है ना, sin degree we have, so theta is equals to bina upon k। ठीक है, बिना अपॉन के वी हैव दिस थीटा, तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो कितनी होगी, थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू बिना ओवर के, अंडरस्टूड ना। एंड दिस थीटा इज इक्वल्स टू बी आई एन ए ओवर के। सो व्हेन वी कीप दिस आई, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, तो is the current। ठीक है ना, ठीक है ना, so theta is directly proportional to I। जितना ज्यादा वो ट्विस्ट, theta is directly proportional to I, जितना ज्यादा वो ट्विस्ट को, जितना ज्यादा उसमें से करंट ट्विस्ट को, जितना ज्यादा उसमें से करंट पास होगा उतना ज्यादा वो ट्विस्ट होगा, एंड इट गिव्स द वैल्यू ऑफ द करंट, उतना ही वो करंट शो करेगा ऑन दैट।